A very warm welcome to the class, guys. I really hope that you guys are doing well. Alright, so let's begin with our discussion. Last class हम discuss कर रहे थे Roman Empire और उसमें जो है हमने discuss कर लिया था क्या? We've already had a discussion on, you can say, the armed forces. Army तक हमने discuss कर लिया था. अब हम discuss करने वाले हैं the next aspect. Okay, so we just continue with our discussion. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? We're doing ठीक है, तो हम फोकस कर रहे हैं किस पे गाइस? हम फोकस कर रहे हैं अर्ली पीरियड पे और यहीं पे हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट एस्पेक्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर इज सक्सेशन. ठीक है, हाउ डू यू थिंक द सक्सेशन वाज? सी, जब तक सेनेट थे तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था गाइस. ठीक है, because membership to the senate was almost for a lifetime, and even if one member went, there was different members who could replace them. But what with the establishment of the principate, जब मोनार्की इस्टेब्लिश हो गई तब चीजें जो हैं वो कैसे चेंज होंगी, क्या होगा नहीं होगा, ऑल दैट वी हैव टू फोकस ऑन. ठीक है, तो अभी हम उसके बारे में ही बात करेंगे. ठीक है, चलो. नाउ सक्सेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, so succession has mostly been what? Succession has mostly been very smooth. Okay, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि हम बात किसकी कर रहे हैं. Okay, so succession has been smooth most of the time. Fine. So generally जो succession है ना, it was based on what? It was based on family descent, and it would either be natural or adoptive. ठीक है, so succession क्या होगा? It is either going to be natural, fine, or it is going to be adoptive. What do you mean by that? So if I have a natural heir to the son, अगर मेरा कोई biological बच्चा है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो कोई there's no issue. But what if I don't have a biological child, right? So I can definitely adopt someone. ठीक है, मैं किसी को adopt कर सकती हूँ, and then that person is going to become the next king. All right, तो जैसे कि Tiberius जो है, who was the son of Augustus, he was actually not the biological son of Augustus, he was someone who was adopted. ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल किसका दे सकते हो? यू कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ टाइबेरियस. तो वो कौन है गाइस? ही इज द अडॉप्टेड सन ऑफ ऑगस्टस. ठीक है, वो उनके बायोलॉजिकल एयर नहीं थे, वो उनके अडॉप्टेड जो बच्चे हैं वो थे. ठीक है, फाइन. सो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जनरली सक्सेशन जो है वो बहुत स्मूथ होता है, बहुत नॉर्मल होता है. पर यस, देयर वाज वन पर्टिकुलर ईयर दैट इज द 69 CE. ओके, दिस वाज दिस पर्टिकुलर ईयर व्हिच वाज नोटोरियस. व्हाई? क्योंकि देयर वर 4 एम्परर्स who changed the throne in quick succession. Fine, एक particular साल है. ठीक है, so we have an exception in the form of 69 CE. 4 emperors changed in 1 year. ठीक है, तो एक साल में जो है वो 4 राजा बदले गए थे. There were various reasons for that. Some fell ill. There were wars also which were going on. So उस वजह से 4 kings have ascended the throne in quick succession, guys. ठीक है, मतलब एक के बाद एक जो है वो राजा आए थे. तो कभी कभी ही ऐसा होता है, अदरवाइज मोस्टली इट रिमेन्स वेरी नॉर्मल, बहुत आराम से होता है. ठीक है, ऑलराइट. Okay, now let us talk about the expansion. ठीक है, तो नेक्स्ट एस्पेक्ट के बारे में जो हम बात करने वाले हैं वो क्या है गाइस? दैट इज योर एक्सपेंशन. ठीक है,
Now you all know that we have been going on about the Roman Empire. हम बोल रहे हैं कि it is an empire which is being ruled by, which is ruled over 3 continents almost. ठीक है? It is an empire across the 3 continents. इतने सारे areas को cover कर रहा है ये वो जो भी है ना, ये सारी चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं. How do you think this expansion would have taken place? Please understand guys कि हर expansion जो है वो आर्मी या वो फौज के बेसिस पे नहीं हो सकता है. You cannot have this expansion on the basis of the armed forces या फौज के बेसिस पे हो, ये जरूरी नहीं है. ठीक है? So how was this gradual expansion taking place? This gradual expansion basically took place by absorbing the dependent kingdoms. ठीक है? So what was done? Okay. So guys, dependent kingdoms जो है वो क्या होती हैं? What is dependent kingdoms? ठीक है? So dependent kingdoms are basically those kingdoms which are rich. ठीक है? दो उनके पास पैसा बहुत है, but they are small, छोटे kingdoms हैं वो, and hence they don't have the bandwidth you can say, or they don't have the armed forces to deal with whom? To deal with mighty empires just like the Romans. ठीक है? तो सब कुछ है उनके पास. They have money, they have everything, but it's just that they don't have that kind of power to deal with the mighty Roman Empire. ठीक है? तो इसीलिए इनको क्या कहा गया है? इनको dependent kingdoms कहा गया है. Fine. So they're dependent on the Roman Empire for their protection. Just like Nepal. एग्जाम्पल दे रही हूं, नेपाल इज डिपेंडेंट ऑन इंडिया फॉर देयर प्रोटेक्शन. है ना, हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी अपनी आर्म फोर्सेस नहीं है. ठीक है? अभी सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है. आई डोंट नो द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में क्या चल रहा है, वो एक डिफरेंट क्लास है ऑल टुगेदर. ठीक है? तो उसमें हम नहीं जाएंगे, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि जस्ट लाइक नेपाल इज अ डिपेंडेंट किंगडम. ठीक है? ओके. सो द नियर ईस्टर्न एरिया. ठीक है? नियर ईस्टर्न मतलब क्या हो गया? जो हमारा रोमन पर्सपेक्टिव है, यानी कि जो मिडिल ईस्टर्न पार्ट है, दैट इज द नियर ईस्टर्न पार्ट. ठीक है? सो इट हैज विच प्रोविंसेस? प्रोविंसेस ऑफ सीरिया, पैलेस्टाइन, मेसोपोटामिया, ये सब जो एरिया है, these were the ones which had a number of dependent kingdoms. ठीक है? So the Near East और तो ये जो एरियाज है ना, मतलब ये जो भी एरियाज मेंशन किए, जैसे सीरिया हो गया, पैलेस्टाइन हो गया, दे वर फुल ऑफ सच डिपेंडेंट किंगडम्स. ठीक है? फाइन. ऑलराइट. ओके. सो दीज किंगडम अब से डिपेंडेंट क्यों, जिसमें आपको बताया, दे वर बिग. ठीक है? दे हैड मनी. फाइन. बट दे कुड नॉट रियली फाइट अगेंस्ट द रोमन्स. ओके? सो डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? सो इसको हम ना रोम का क्लाइंट किंगडम्स भी जो है वो बोल सकते हैं. ठीक है? अ टर्म हैज बीन यूज्ड फॉर दीज किंगडम्स, व्हाट इज नोन एज योर क्लाइंट किंगडम्स. ठीक है? सो क्लाइंट किंगडम्स गाइस कौन होती हैं? Which are these client kingdoms? So client kingdoms are basically local kingdoms. Fine. Now their rulers relied on the support which was given to them by the Roman Empire. Fine. And in return, the Roman Empire just allowed them to exist. देखिए, क्लाइंट का मतलब क्या होता है कि मैं अपने एग्जिस्टेंस के लिए फुल्ली अगर किसी पर डिपेंडेंट हूं, ठीक है, तो उसको हम क्लाइंट किंगडम कहते हैं. फाइन. सो क्लाइंट किंगडम वो बेसिकली दोज किंगडम्स
ठीक है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ओके, सो मैं क्या बात कर रही थी, क्लाइंट किंगडम्स, ठीक है, सो दीज आर किंगडम्स, फाइन, जो कि रोमन एम्पायर के ऊपर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट ऑन व्हाट? डिपेंडेंट फॉर द एग्जिस्टेंस, मतलब रोमन एम्पायर चाहे तो एक दिन में जो है वो इनको नेस्तनाबूद कर सकता है, एक दिन में इनको खत्म कर सकता है, बिकॉज दे वेरी स्मॉल किंगडम्स गाइस, ठीक है, बहुत छोटे छोटे किंगडम्स हैं। फाइन, सो रोमन एम्पायर इज जस्ट अलाउइंग देम टू एग्जिस्ट, एंड इन रिटर्न दे आर प्रोवाइडिंग व्हाट? इन रिटर्न ये रोमन एम्पायर को पैसा, ठीक है, प्लस आर्म्ड सपोर्ट जो है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। फाइन, जस्ट बिकॉज दे कैन नॉट फाइट विद द माइटी रोमन एम्पायर, दैट इज व्हाई दे आर लाइक दिस। ओके, सो यहां पे आप एग्जाम्पल ले सकते हो हेरोड्स का। हेरोड्स वाज अ किंगडम which was yielding around 125,000 kgs of gold worth of taxes, ठीक है। सो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे। एग्जाम्पल किसका ले सकते हो आप? एग्जाम्पल ले सकते हो हेरोड्स का, which was yielding, can you imagine 125,000 kgs of gold? In the form of taxes, ठीक है। तो रोमन एम्पायर को ऑब्वियस बात है कि इससे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था, ठीक है। चलिए, ऑलराइट, नेक्स्ट जो हमें देखना है, okay, just give me 1 second guys. तो ये तो हो गई हमारी दो एस्पेक्ट की बात हमने कर ली है, विच इज सक्सेशन एंड देन वी हैव एक्सपेंशन, ठीक है। ये दो चीजें जो है वो हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट एस्पेक्ट विच इज अबाउट अर्बनाइजेशन, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट टेक 2 minutes गाइस, इसको टेक डाउन कर लीजिए, फिर हम अर्बनाइजेशन वाले एस्पेक्ट पे जो है वो बढ़ते हैं, ठीक है, क्विकली। ओके, तो आई एम श्योर वी डन विद दिस, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई एम ऑडिबल राइट? हाँ, चलिए, so we will now move ahead. अब since we're talking about such a huge empire, right guys, almost across 3 continents, इतने सारे डिपेंडेंट किंगडम्स, इतने सारे क्लाइंट किंगडम्स है, तो क्वेश्चन ये है कि हाउ आर दे बीइंग गवर्नड, ठीक है। बिकॉज इतना बड़ा एम्पायर, उसको आप गवर्न कैसे कीजिएगा? दैट्स वेरी लाइक अ वेरी जेन्युइन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। So let us see how the administration was happening, or in general governance जो है वो कैसे हो रहा था। That is another aspect that we discuss, ठीक है। सॉरी, ठीक है ना। जो गवर्नेंस है एंड व्हाई इट वाज सच अ गुड गवर्नेंस, द आंसर टू दिस क्वेश्चन लाइज इन द फैक्ट दैट द ग्रेट अर्बन सेंटर्स, ठीक है, तो 3 अर्बन सेंटर्स है विच इज कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया एंड एंटियोक, ठीक है। ये सबसे बिगेस्ट है अमंग ऑल द अर्बन सेंटर्स। They were basically the true bedrock of this imperial system, and how, ठीक है। Let me explain this, okay। अब मान लेते हैं, आपने देखा है कि मेडिटेरेनियन जो है वो लिटरली इन द हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर है, ठीक है। फाइन, सो सपोज दिस इज योर रोमन, दिस इज योर मेडिटेरेनियन, ठीक है। ये आपका कौन सा सी हो गया? ये हो गया आपका मेडिटेरेनियन सी, ओके। अब मेडिटेरेनियन सी के इर्द गिर्द, ठीक है, दे हैव अ नंबर ऑफ व्हाट इज नोन एज योर अर्बन सेंटर्स, ठीक है।
छोटे छोटे अर्बन सेंटर्स हैं और सबसे बड़े जो है वो कौन से हैं? यू हैव कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया एंड एंटियोक, ठीक है। सो मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे एक्सप्लेन कर रही हूं। तो सपोज अलेक्जेंड्रिया जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। देन यू हैव कार्थेज ओवर हियर, जस्ट एन एक्सप्लेनेशन, फाइन। एंड देन सपोज यू हैव एंटियोक ओवर हियर, ठीक है, फाइन। सो व्हाट वर दीज अर्बन सेंटर्स डूइंग? So these urban centers were responsible for governing their own land, ठीक है। तो मान लो कार्थेज है और कार्थेज के अंडर ये वाला जो पूरा एरिया है ना वो आ रहा है, ठीक है। सो कार्थेज इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग दिस एंटायर लैंड, ठीक है। सिमिलरली सपोज एंटियोक के अंदर जो है वो इतना एरिया आ रहा है, देन एंटियोक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नेंस ऑफ दिस लैंड, फाइन। Similarly, if you have Alexandria और Alexandria के अंदर ये पूरा लैंड आता है, ठीक है, then Alexandria is responsible for governing this entire land, ठीक है। सो अभी यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है सिर्फ 3 अर्बन सेंटर्स का. देयर वर मेनी मोर अर्बन सेंटर्स, एंड इज दीज अर्बन सेंटर्स व्हिच प्लेड अ very important role in what? It is these urban centers that played a very important role in the governance. ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि वो कैसे होता है. ये डायग्राम तो आप सबको क्लियर हो ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है. अरे सॉरी गाइस, ये ऐसे ही जाएगा. ठीक है, ऑल राइट, ओके. सो चलिए, तो मैंने आपको समझा दिया कि जो भी जो इनके अर्बन सेंटर्स हैं, ठीक है, सो गवर्नेंस लाइज हुए इट लाइज इन द हैंड्स ऑफ अर्बन सेंटर्स गाइस. ठीक है, जितने भी अर्बन सेंटर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है, और इसमें से लार्जेस्ट कौन है? सो वी हैव कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया एंड एंटियोक. ठीक है, ये याद रखना. ठीक है, कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया एंड एंटियोक. ठीक है, फाइन. ये क्या है गाइस? दीज आर योर बेसिक अर्बन सेक्टर्स जो है वो है हमारे, फाइन. एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? दे आर द वंस हु आर होल्डिंग दिस इंपीरियल सिस्टम. ठीक है, सो इट वाज थ्रू द सिटीज दैट द गवर्नमेंट वाज एबल टू टैक्स द प्रोविंशियल कंट्री साइड. ठीक है, सो इन सिटीज के थ्रू, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि विच एवर एरिया वॉज अंडर Carthage was responsible for governing that area, and not just governance, they were also responsible for collecting taxes. ठीक है, so it was through the cities ठीक है, to the cities that the government जो अर्बन एरियाज हैं वो क्या करेंगे? वो रूरल एरिया से टैक्सेस कलेक्ट करेंगे और किसको देंगे? वो एम्परर को देंगे. ठीक है, दिस इज हाउ द एम्परर इज एबल टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम वेयर? दिस इज हाउ द एम्परर इज एबल टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द कंट्री साइड. ठीक है, फाइन, ऑल राइट. सो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो लोकल अपर क्लासेस हैं, as in the upper classes, suppose Carthage, Antioch, जो भी हैं, they were actively involved in what? They were actively involved in the administrating process. ठीक है, fine, all right. So they were what? They were actively involved in the administrating process, and they basically collaborated, है ना? वो एक मिडलमैन की तरह एक्ट करते थे, एंड दे कोलैबोरेटेड विद द रोमन एम्पायर, दे कोलैबोरेटेड विद द एम्परर, एंड दे वुड असिस्ट द एम्परर इन व्हाट? दे वुड असिस्ट द एम्परर इन गवर्नेंस एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस. ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या जान पा रहे हैं गाइस?
local upper classes ठीक है. So ये इन्वॉल्व थे किस चीज में? They were involved in taxation, they were involved in local governance. ठीक है, fine, all right. Okay. So throughout the second and the third centuries, all right, till we have the early period, it is actually the upper classes, all right, the provincial upper classes who supplied most of the officers for the government. ठीक है, जितने भी officers required हैं वो कौन supply कर रहा है? So most of the officers were being supplied by the governance over here. कोई है? ये किसका मैसेज है फिर? ओके, ऑलराइट गाइस, ठीक है, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, फिर हम इसको देखेंगे क्या हो रहा है. सो लोकल अपर क्लासेस इन्वॉल्वड इन टैक्सेशन एंड गवर्नेंस, फाइन. सो हम ये देख रहे हैं कि जो भी लोकल अपर क्लासेस है, दे आर द वंस हु आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग ऑल द ऑफिसर्स हु आर रिक्वायर्ड बाय द गवर्नेंस. ठीक है, ऑलराइट. So it was the provincial upper classes who provided the most of the cadre that governed the provinces and commanded the army. ठीक है. So what is happening here? कि जो भी अपर क्लासेस हैं एक एरिया के, चाहे वो एंटीओक हो, कार्थेज हो, अलेक्जेंड्रिया हो, जो भी अर्बन सेक्टर्स हैं, दे आर द वंस हु आर प्रोवाइडिंग ऑफिसर्स इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप. ठीक है, तो जो भी ऑफिसर्स हैं वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? यही लोग कर रहे हैं. ठीक है, सो प्रोविंशियल तो ये क्या करते थे? ऑफिसर्स सिलेक्ट करके दे वुड बी प्रोवाइडिंग इट टू द cadre of officers. ठीक है, to the governance, to the king. Fine, all right. So basically these people, जो upper classes के लोग थे, who were assisting the king in the governance of the urban areas, as well as assisting the king in taxation, है ना? ये वो अर्बन सेक्टर के लोग हैं जो ऑब्वियसली अर्बन एरियाज में रहते हैं और वो दो चीजों में राजा को असिस्ट कर रहे हैं. पहली चीज क्या है? दे आर असिस्टिंग द किंग इन टैक्सेशन, कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम द रूरल एरियाज. दूसरी चीज वो असिस्ट कर रहे हैं राजा को एडमिनिस्ट्रेशन में. ठीक है, सो दे बेसिकली केम टू फॉर्म अ न्यू एलीट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड मिलिट्री कमांडर्स. ठीक है, व्हाट डिड दे फॉर्म? New elite administrator and military commanders. Okay, so ये जो upper classes हैं, they have formed what? They have formed a new section of the society and they're the elite administrators and they're also the commanders. ठीक है, fine. Obviously they had backing of the king. उनको राजा जो है वो पूरा support देते थे. Fine. So eventually these people, ठीक है, ये लोग जितने भी लोग हैं, eventually they had become even more powerful than the senatorial class. ठीक है, फाइन. क्या बन गए थे वो? जो senatorial class है उससे कहीं ज्यादा पावरफुल ये लोग हो चुके हैं. कौन? जो न्यू अर्बन एलीट हैं, फाइन,
who are working with the emperor and assisting in the administration, they have become even more powerful, है ना? वो senatorial class से कहीं ज़्यादा powerful हो चुके हैं because obviously they have the backing of the emperor. ठीक है? All right. Okay. So we have an example of an emperor, Gallienus. ठीक है? So यहाँ पे मैं आपको example जो है वो लिख देती हूँ. ये interesting example है, ध्यान रखिएगा. ठीक है? So we have an example of this person called Gallienus. Okay? Gallienus जो है वो एक emperor है, and you know what he has done? He has forbade the senatorial class from becoming military commanders, क्योंकि वो चाहते थे कि senatorial class को धीरे धीरे exclude किया जा सके. Fine? He wanted to exclude the senatorial class from what? He wanted to exclude the senatorial class from this from being in the administration. ठीक है? तो वो धीरे धीरे उनको फोरबेड कर दिया कि वो आर्म फोर्सेस में सर्व नहीं करेंगे, एंड ही डिड नॉट वांट दैट दीज पीपल शुड हैव कंट्रोल ओवर द एम्पायर. फाइन. सो व्हाट हैज ही डन? ही हैज forbade the Senate तो इन्होंने क्या करा है कि जो सेनेटोरियल लोग हैं वो आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा नहीं बनेंगे. ठीक है? दे नॉट गोइंग टू बिकम व्हाट? दे नॉट गोइंग टू बिकम पार्ट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस. ठीक है? तो ये तो हो गई बाय गाइस बात गवर्नेंस की. ठीक है? अब एक और चीज हमें थोड़ी बहुत जाननी, तो हमने एक बेसिक जो फीचर्स हैं हमारे अर्ली एम्पायर के वो तो हमने देख लिए हैं. ठीक है? फाइन. These are your basic features of the early empire. Fine. Now we also have to take a look at few things which were happening here and there. मतलब एक local life जो है वो लोगों की कैसी रही होगी, क्योंकि अभी तक जो हमने बात की है we have spoken about institutions which are related to the governance. Fine. So if we talk about the daily life of people, yes, the life was good. How do we know that? There was this common striking feature was public baths, जिसको हम हमाम बोलते हैं. So this was a very common part of the Roman urban life. Fine. Also guys, the urban population enjoyed a high degree of entertainment. Fine. So out of 365 days, 176 days per year was reserved for what? It was reserved for spectacular. Spectacular क्या है? Spectacular is basically shows. So I'm sure you know Roman Empire is known for its Colosseum, right? Colosseum was this huge amphitheater kind of a thing, right? Where you have all of these gladiator matches, etc. ठीक है? तो ये क्यों हो रही थी gladiator matches? किसके लिए? Obviously for the public, isn't it? ताकि वो enjoy कर सके. So they had some high degree of entertainment as well. ठीक है? चलिए. Now, the next thing we have to discuss is the 3rd century crisis. So the early empire is now over, fine, and we will see a crisis which will emerge in the 3rd century, fine. What kind of crisis is this? Guys, please understand कि जो 1st और 2nd centuries हैं, they are a period of peace for the Roman Empire. कोई मसला नहीं है, कोई issues नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है? But the 3rd century will see that the empire was fighting on several fronts. बहुत सारे जगह पे वो एक साथ लड़ रहे थे. ठीक है? So what was happening in the 3rd century? Okay. So why is this a 3rd century crisis? क्यों है ये crisis? ठीक है? एम्पायर जो है वो बहुत सारे फ्रंट्स पे गाइस देखा जाए तो एक साथ लड़ रहे हैं. दैट इज वाई इट इज बीन कॉल्ड एज द 3rd century crisis. ठीक है?
तो चलिए हम देखते हैं कि कौन से फ्रंट पे वो कहाँ लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रंट 1। ऑलराइट, सो व्हाट वाज हैपनिंग ऑन फ्रंट 1? फ्रंट 1 पे वो किससे लड़ रहे हैं? लेट्स टेक अ लुक एट दैट। So you all know, as I have told you all, that Iran and the Roman Empire have been bitter enemies of each other for their entire history, है ना? मतलब अपनी पूरी इतिहास काल में they have been bitter enemies of one another, nothing less, nothing more. ठीक है, fine. So in Iran, a new, very aggressive dynasty has emerged, and that is known as your Sassanians. ठीक है? So what has happened? So what has happened in Iran? A new aggressive dynasty has emerged, fine. And in just 15 years, they were expanding rapidly. ठीक है? Okay. So the Roman Empire was fighting with them also. ठीक है? So there's a famous rock cut inscription which is in 3 languages. Okay. So ये inscription बहुत important है. Please ध्यान देंगे. I'm just going to change the color for this inscription. Famous rock cut inscription. It is in 3 languages. All right. So in this Shapur 1, he's the Iranian ruler. He claims to have destroyed Roman army, which was around 60,000 strong. ठीक है? And took over Antioch. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस इंस्क्रिप्शन से वी कांट रियली से कि ये इंस्क्रिप्शन बिल्कुल सही है और एग्जैजरेटेड नहीं है। ऐसा तो नहीं है गाइस, ठीक है, एग्जैजरेशन तो है ही डेफिनेटली। बट हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाउ even if they have not defeated 60,000, but definitely Roman Empire is fighting with them, है ना? ऐसा तो नहीं कि रोमन एम्पायर से लड़ नहीं रहा है, अटैक कर रहे हैं तो रोमन एम्पायर को लड़ना भी पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज हैपनिंग ऑन फ्रंट 1। ठीक है, फ्रंट 2 पे क्या हो रहा है, चलिए हम वो देखते हैं। All right. So on front 2, what we have is a series of Germanic invasions. Fine. So Germanic tribes, okay, और उन्होंने अपनी क्या बनाई है, कॉन्फेडरेसीज बनाई है। ठीक है, जर्मैनिक ट्राइब्स क्या है गाइस, लेट मी टेल यू। सो जर्मनी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हैड ट्राइब्स, ओके, फ्रैंक्स, गॉथ्स, एल्यूमिनी, लोम्बार्ड्स एक्सेट्रा। ये सब कौन है, ये सब जर्मनी में जो है ये ट्राइब्स हैं। ठीक है, फाइन। सो व्हाट हैव दीज ट्राइब्स डन? So these tribes have formed confederacies, okay, so तो जर्मन ट्राइब्स have formed confederacies। इसमें एग्जाम्पल कौन से हैं, एल्यूमिनी है, फ्रैंक्स हैं, गॉथ्स हैं। ठीक है,
These are the names of the tribes, guys. Okay. इनफैक्ट फ्रांस का जो नाम है वो इस फ्रैंक्स के नेम पे रखा गया है, वो आगे आप पढ़ोगे अभी, डोंट वरी, ठीक है. सो दीज आर द ट्राइब्स, ओके, दे हैव स्टार्टेड. सो ये जो ट्राइब्स हैं, दे आर डूइंग अ कंटिन्यूअस अटैक on the northern side of Roman Empire. ठीक है. So from the period of 233 to 280, okay. So period of 233 to 280, repeated, okay, repeated attacks on the area of Rhine and Danube region. ठीक है. सो रिपीटेड अटैक्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे. फाइन. मतलब द अटैक वाज सो मच दैट द रोमन्स हैड टू अबैंडन दोस टेरिटरीज. मतलब उनको वो टेरिटरीज जो है वो छोड़नी पड़ी, इतना ज्यादा अटैक जो है वो हो रहा था. ठीक है. ऑलराइट. यस. So they had to attack those territories. Fine. And you know what the Romans called these tribes? The Romans called these tribes as barbarians. Fine. Okay. यहाँ पे एक और चीज मैं लिख देती हूँ, that Romans had to So रोमन्स को क्या करना पड़ा गाइस? रोमन्स को जो टेरिटरीज हैं वो अबैंडन करनी पड़ी. ठीक है. ऑल्सो देयर वाज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. सो फ्रंट 3 क्या है गाइस? फ्रंट 3 इज विद इन द एम्पायर इटसेल्फ. ठीक है. सो व्हाट इज द फ्रंट 3? Within the empire, there was political instability. ठीक है. क्या थी guys? Political instability थी. How do we know that? Because there was a rapid succession of 25 emperors in 47 years. ठीक है. क्या हो रहा है? 25 emperors changed in 47 years. मतलब आप देखो कि हर एम्परर ने ऑलमोस्ट बस एक डेढ़ साल जो है वो रूल किया है. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि देयर वाज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एज वेल व्हिच द एम्पायर वाज गोइंग थ्रू. ठीक है. चलिए, सो आई एम गोइंग टू गिव यू 5 मिनट्स नाउ टू टेक दिस एंड द अदर वन डाउन. फटाफट से लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे. Okay, so I'm sure this is done. इसको टेक डाउन कर लो. ओके. चलिए. So guys, I'm sure कि ये सबका हो चुका है. Fine. The next aspect that we have to discuss is the gender literacy and culture. ठीक है. तो गाइस देखिए, यहाँ पे ना मैं आपको नोट्स जो है वो एज सच नहीं दूंगी. ठीक है. सो जस्ट गोइंग टू डिस्कस दिस विद यू बिकॉज ये बहुत सिंपल सा है. वी जस्ट हैव टू हैव अ डिस्कशन ऑन दिस. ठीक है. सो एक नॉर्मल डिस्कशन करेंगे. फाइन. और जहां पे मुझे लगेगा कि नोट्स इंपॉर्टेंट है वहां मैं आपको नोट्स डेफिनेटली दूंगी. ठीक है. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जेंडर के बारे में. लिटिल बिट अबाउट हाउ यू नो द फैमिली इक्वेशन वाज, हाउ वाज इट वर्किंग. इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. ठीक है. ओके. सो चलिए, लेट्स टॉक अबाउट द फैमिलीज नाउ. फाइन. सो रोमन एम्पायर का एक बहुत मॉडर्न फीचर है उनकी फैमिली. व्हाई? Because even in ancient times you will see the prevalence of nuclear families. तो वहां पे कोई भी बच्चा जो है
adult sons did not live with their parents, fine, and two adult sons, as in मान लो दोनों भाई हैं, they will never have a same household, as in they will never live in the same house, never. जैसे यहाँ पे joint families होती हैं, जहाँ पे आप देखोगे दो भाई हैं, उनके परिवार हैं, वो सब साथ में रह रहे हैं. So that kind of thing was definitely not there. Okay, so you would not find two brothers living together. ठीक है? Now, slaves were genuinely considered as the part of the family, fine. By later republic, as in जो late republic period है, अगर हम typical form of marriage की बात करें, so marriage was not something where the wife would completely transfer into her husband's authority. No, absolutely not. Yes, she did get married and the husband did have authority over her, but it does not mean that she's completely come under her husband's authority. No, she still had rights over herself. Most importantly, she still had full rights over her father's property. Okay? Now, women did have to give dowry when they were getting married, and the dowry did go to the husband for the duration of the marriage. Okay? And women remain, अब सिर्फ देखो dowry है उनके पास, ठीक है? Women remained independent and primary heirs of their father's property. और वो independent owner है, वो अपने husbands के साथ co-own नहीं कर रही हैं land को, नहीं. Husbands only have right to what? Husbands only have right to the dowry. That's it. Nothing else, nothing more. उनका और किसी चीज के ऊपर कोई right नहीं है. They don't have any right on their wife's property, on their wife's father's property. They have no right. ठीक है? All right. So, so women actually had a good amount of rights as far as, owning and managing property was concerned. Okay. Now, according to the law did not see the married couple as one financial entity. ठीक है, ऐसा नहीं कि मिस्टर एंड मिसेस शर्मा हैं या मिस्टर एंड मिसेस सिन्हा हैं. नो, दे वर नॉट जस्ट वन फाइनेंशियल एंटिटी, एब्सोल्युटली नॉट. दे वर टू फाइनेंशियल एंटिटीज एंड द वाइफ हैड कंप्लीटली different legal rights as compared to the husband. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो rights wife के हैं वही rights husband के भी हैं, बिल्कुल नहीं. The wife had different legal rights, guys. Okay. सो जैसे शादी हो जाती है ना, तो इंडिया में आप एक चीज देखोगे कि हम हस्बैंड वाइफ को ना एक ब्लॉब कंसिडर करते हैं कि ये तो एक ही है करके. ठीक है, लाइक मिस्टर मिसेस शर्मा, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया अभी. बट इन रोमन एम्पायर द लीगल एंटिटी मेड श्योर दैट द वाइफ एंड हस्बैंड वर कंसिडर्ड एज टू डिफरेंट फाइनेंशियल एंटिटीज. मतलब वाइफ की अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, फाइनेंशियल अर्निंग्स हो सकती है. एट द सेम टाइम द हस्बैंड कैन हैव हिज ओन फाइनेंशियल अर्निंग्स and financial requirements. Okay, now divorce was fairly easy. It was just, you just needed to like make a notice or the intent that you wanted to dissolve the marriage, and it was available to both men and women. Okay, men did get married in their late 20s and early 30s, and women would get married in their late teens and early 20s. Now, because of this age gap, yes, there was some authority which the men had over women, ऐसा नहीं है. So, yes, there was domination by their husbands. So, Augustine, all right, he was a great Catholic bishop. He tells us that his mother was constantly beaten by his father and that others also had similar kind of experiences. ठीक है? Augustine कौन है? Augustine was actually a bishop of the North African city of Hippo. Fine, and he is known for his intellectual authority. इन्होंने काफी major contribution दिया है in the field of psychology actually. ठीक है? All right. So what do we have over here? So we see that yes, there was domestic violence was common because of the age gap. Fine. All right. Okay. Now one more thing we have to understand is that fathers had legal control over their children. Mothers का नहीं होता था. Fathers had legal control over their children. Fine. And the control was so much
that the fathers had control over the lives of their children. अपने बच्चों की जिंदगियों पे उनका कंट्रोल था, मतलब उनके जीवन मरण पे उनका कंट्रोल था. There have been instances where the child has been left out in the cold to die, and this was not considered as something illegal. क्योंकि why? Because father ने किया, तो father को जो है वो कंट्रोल है, father has the right to do so. ठीक है? All right. Now, let's talk about literacy. Okay, ये तो हमने बात की जेंडर की. Let's talk about literacy. So guys, देखिए अगर हम बात करें लिटरेसी की भी, तो कैजुअल लिटरेसी क्या होती है? Where you basically know just how to read and write. ठीक है? आप बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको सिर्फ लिखना और पढ़ना आता है. Fine. So you're not educated, you just know how to read and write. Okay. So casual literacy की अगर हम बात करें, so obviously it is going to vary from place to place, because please understand that they're covering 3 continents and it's not easy, right? So ये vary करेगा हर जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है? लेकिन एक example है of a place called Pompeii. Now Pompeii was buried under volcanic eruption in 79 CE. What is this volcanic eruption? So Pompeii जो है ना, it was located near a volcano. Fine, it was an active volcano. And once one day what happened, the volcano erupted. ठीक है? और पूरा शहर जो है वो लावा में सबमर्ज हो गया था. ठीक है? Many people died and they're still preserved like that because they had turned into मतलब वो basically एक क्या कहते हैं इसको, रॉक में टर्न हो गए. ठीक है? So you have a lot of examples from there. So Pompeii has a strong evidence of literacy. And how do we know that? Because the walls have advertisements and graffitis. ग्राफिटीज क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा आजकल फ्लाईओवर्स के वॉल पे या अंडरग्राउंड जो हमारे टनल्स जा रहे होते हैं उनके वॉल्स पे आप देखोगे पेंटिंग्स की रहती हैं, मैसेजेस दिए रहते हैं. ठीक है? तो उसको जो है वो ग्राफिटीज बोलते हैं. फाइन. सो यू विल फाइंड दिस वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑल ओवर द सिटी, which means it tells us that yes, maybe the people had good casual literacy. उनको बेसिक लिखना पढ़ना जो है वो आता होगा. ठीक है? Besides this, we've also found thousands of papyri scrolls from Egypt. ठीक है? But they were mostly written by professional scribes. Okay? तो हम ये assume कर सकते हैं कि हो सकता है literacy rate बहुत ज़्यादा widespread नहीं होगी, लेकिन जिनको requirement थी उनको definitely आती थी. ठीक है? अब अगर हम बात कर रहे हैं cultural diversity के बारे में. So guys, you already know the kind of cultural diversity that we're going to talk about. हम ऑलरेडी बात कर भी चुके हैं इसके बारे में. So we have so many different kinds of people, right? We have so many continents being covered. We have so many different kinds of people who are living together. So definitely there is going to be a number of languages, number of customs, number of traditions which is going to be followed, है ना? मतलब अलग अलग तरीके से होंगे, बहुत सारे होंगे. ठीक है? फाइन. सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? सो वी हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस बीइंग स्पोकन. और ना ये क्वेश्चन आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा तो उसमें ये सवाल पूछा गया है कि वेयर आर दीज लैंग्वेजेस बीइंग स्पोकन. ठीक है? तो मैं आपको ये नोट्स में जो है वो दे रही हूँ, तो प्लीज जस्ट टेक इट डाउन. ऑलराइट? नियर ईस्ट की क्या प्रोविंसेस हैं मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. ठीक है? ओके. सो ये तो हो गई भाषाओं की बात, राइट? But you know what, guys? Most of these languages that you find here, most of these languages were actually just orally being spoken. मतलब इनको सिर्फ बोला जा रहा था,
ओरली बोला जाता था, इनको कोई रिटन वो नहीं था, स्क्रिप्ट नहीं था, ठीक है। सो अर्मेनियन वाज रिटन ओनली इन द 5th सेंचुरी, ओके। सो अर्मेनियन जो है वो कब लिखना शुरू किया लोगों ने? Okay, so Armenian was written down when? Armenian was written down only in the as late as the 5th century, fine. और Coptic जो है, Coptic भाषा, it was already being spoken, fine. It was already being translated for Bible in the 3rd century, fine. Latin and Greek आप जानते हैं, these are languages of the administration, fine. और Celtic भाषा जो है वो लिखा जाना बंद ही हो गया था 1st century के बाद, ठीक है। Celtic ceased to be written मतलब लोगों ने इसको लिखना जो है, मतलब एक होता है ना कि ऑब्सोलीट हो जाती है कोई भाषा, जैसे लैटिन जो है वो ऑब्सोलीट हो चुकी है, ठीक है। सो 1st सेंचुरी, आफ्टर 1st सेंचुरी ओके, तो क्या हुआ कि लोगों ने इसको लिखना जो है वो बंद कर दिया, ठीक है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? अब हम एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, विच इज योर इकोनॉमिक एक्सपेंशन गाइस। चलो ओके, सो सबसे पहले अगर हम बात करें इकोनॉमिक एक्सपेंशन के बारे में, सो लेट्स वी टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी ऑफ द रोमन एम्पायर, ठीक है। सो व्हाट आर द बेसिक एक्टिविटीज दैट दे आर डूइंग गाइस? सो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या है? सो ऑब्वियसली दे हैव हार्बर्स, माइंस, क्वेरीज, ब्रिकयार्ड्स, ऑलिव ऑयल फैक्ट्रीज, ठीक है। सो एग्रीकल्चर तो देखो है ही है, ठीक है, वो तो यूजुअली हर जगह मेन स्टे रहता है agriculture. Then you have harbors because they have long distance trade. Then they have brickyards, olive oil factories, quarries, mines, ठीक है। क्वारीज वो जगह होती है बच्चे जहां से हम पत्थर निकालते हैं, जैसे मार्बल की क्वारीज होती है, वहां से हम मार्बल निकालते हैं, फाइन। ब्रिकयार्ड्स आर प्लेसेस वेयर ब्रिक्स आर मेड, ठीक है। सो दीज आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज व्हिच दे वर मोस्टली फोकसिंग ऑन, ठीक है। ऑल राइट, ओके, तो अब हम क्या बात करने वाले हैं? नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हिच ऑफ द प्रोविंसेस वर बेसिकली नोन फॉर व्हिच ऑफ दीज एक्टिविटीज, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ऑलिव ऑयल फैक्ट्रीज हैं, फिर हमारे क्वारीज हैं, माइंस हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। सो व्हीट, वाइन एंड ऑलिव ऑयल, these are 3 things which basically dominated the economic activities guys, ठीक है। क्या है? 3 चीजें हैं जो डोमिनेट करी इकोनॉमिक एक्टिविटी को, और वो क्या है? So we have wheat, wine, olive oil. This is doing what? This is dominating ओके, तो ये क्या कर रही हैं? ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ना पूरा डोमिनेट करती हैं गाइस, ठीक है। दीज आर 3 एक्टिविटीज, 3 प्रोडक्ट्स यू कैन से व्हिच आर गोइंग टू डोमिनेट दिस एंटायर फील्ड, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा क्या बात करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द कंटेनर्स, ओके। तो ये 3 चीज हैं, अब आप देख सकते हो कि तीनों चीज 3 में से 2 चीज जो है वो लिक्विड हैं, ठीक है।
So how are these liquids being transported? And it is the containers of the liquid which actually give us some information. तो चलिए हम देखते हैं कि क्या है कंटेनर्स में. So liquid, ठीक है, जो भी लिक्विड है, एक सेकेंड, हाँ, alright. So liquid like olive oil or wine was being transported in containers called amphorae. ठीक है, so जो भी liquid चीजें हैं, okay, so liquid like wine and olive oil. अभी एम्फोरे दिखता कैसा है गाइस? एम्फोरे ना बहुत ज्यादा सुराही जैसा दिखता है, ठीक है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्फोरे. सो यू हैव दिस लॉन्ग नेक, देन यू हैव दिस pot belly kind of a thing, you have handles attached to it, ठीक है. So liquid was being transported in containers. अब आप मेरे से पूछोगे मैम हम containers के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? What is the point of reading about containers? Because you know what guys, these containers can give you a lot of idea regarding the economic activities. It can tell you about how far and wide these products were in demand. ठीक है, तो जहां जहां से हमें इसके fragments मिले हैं, ठीक है, the fragments and shreds of these containers have been found in number of places, all right, and as a result we have been able to conclude कि इन जगहों पे इसका export होता होगा, ठीक है. So if these containers suppose have been found in India, ठीक है, they have been found in India, so can we conclude that amphorae containers which contained olive oil and wine was definitely being exported to India, right? और इसीलिए हम containers की बात करते हैं because इनके जो shreds हैं और जो भी चीजें हैं they help us understand the extent to which the trade was going, ठीक है. All right, now okay. Apart from this, so apart from telling us, so what do the containers tell us? Okay. So they tell us about what? They tell us about the extent of container, sorry, extent of trade कि हाँ भाई यहाँ तक जो है वो हो रहा था, ठीक है. Now archaeologists have been able to reconstruct the shape of the containers, exactly what they carried. तो हमें कैसे पता कि उसमें क्या ले जाया जा रहा था? So मिट्टी जो है ना गाइस वो थोड़ा थोड़ा अब्जॉर्ब करती है चीजें, फाइन. आप कभी ठंडा पानी रख के देखना घड़े में, आप देखो घड़े का जो बाहरी हिस्सा है ना वो भी ठंडा हो जाता है. सो मिट्टी हल्का हल्का अब्जॉर्ब करती है चीजों को. सो व्हेन यू कैरिंग when your containers are full of wine and olive oil, definitely it will have कुछ हल्का सा soak in तो हो गया होगा in the containers, right? So what you can do is you can just do a chemical analysis of it and you will understand what was being carried, ठीक है. So they have been able to reconstruct the exact shape, what was being carried, ठीक है, fine. Also by examining the clay content and matching the finds of the clay pits, it is now, so देखो एक और चीज यहाँ पे clear होती है. So how do we know? अब जो clay जो वो amphorae container है, ठीक है, fine, वो किससे बना हुआ है guys? It is made up of clay. Okay, what is it made up of? It is made up of clay, है ना, clay का बना हुआ है. So can we not see? So if we look at the clay container and we try to match it from where the clay is coming, जैसे for example मान लेते हैं कि जो amphorae container है वो red soil का बना हुआ है. Just as an example I'm giving, okay? So suppose it is made up of what? Suppose it is made up of red soil, ठीक है, red soil का बना हुआ है, बहुत अच्छी बात है, very good. So when it is made up of red soil, what is going to happen? Now can we not assume, अब जैसे मान लो कि हमें ये पता है कि red soil जो है वो नॉर्थ अफ्रीका में होती है, for example,
ठीक है. So can we conclude that amphorae would have been manufactured in North Africa? क्योंकि raw material तो देखो वहीं से आ रहा है, ठीक है. Where is the raw material coming from? Raw material is coming from there itself, ठीक है. Fine. So okay, this is what the archaeologists have been able to do by looking at the clay content and then matching it throughout the Mediterranean. मतलब मान लो कि रेड सॉइल का बना हुआ है तो वो देखेंगे कि wherever red soil has been found, where in the Roman Empire, then they can come to the conclusion कि okay, this is where the containers were being produced. Fine. So इससे हमें और भी चीजें जो हैं वो पता चलती हैं, ठीक है. ऑलराइट, तो अब हम क्या बात करने वाले हैं गाइस. तो ये तो हो गई हमारे कंटेनर्स की बात. दैट इज अबाउट द एक्सटेंट ऑफ ट्रेड, ठीक है. टेल अस एग्जैक्ट शेप, liquid carried, where it was produced, मतलब जो ये कंटेनर है उसको कहाँ प्रोड्यूस किया गया है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट क्ले हैज बीन यूज्ड टू मेक इट, ठीक है. The next thing we're going to discuss is the Spanish olive oil. ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है. चलो ओके भाई. सो स्पेनिश ऑलिव ऑयल, ठीक है. सो वी आर टेकिंग स्पेनिश ऑलिव ऑयल एज एन एग्जाम्पल, ठीक है. एज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट we are taking Spanish olive oil as an example of one of the commercial enterprises, ठीक है. Fine. This is reached its peak in 140 to 160 years. Okay. So Spanish olive oil is what? One of our main commercial exports. ठीक है. क्या है? This is a okay. तो ये क्या है guys? This is one of the main commercial exports, है ना. बहुत एक बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल एक्सपोर्ट है कि हाँ हम ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है. फाइन. Now Spanish olive oil was carried in a container called Dressel 20, ठीक है. So it is a form of amphorae only, लेकिन just the different name has been given. So where was it carried? Carried so it looks more or less the same guys, ठीक है. कोई बहुत डिफरेंस नहीं है इनमें, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ठीक है. फाइन. यस. So it is named after the archaeologist who basically established the form. जिसने उसका फॉर्म एस्टैब्लिश किया था उनके नाम पर रखा गया है, ठीक है. Now we can see that the container Dressel 20 was widely scattered around various sites in the Mediterranean, which suggests that Spanish olive oil was, quite huge in demand और काफी मतलब एक बहुत लंबा area of trade है जो ये cover करता है, ठीक है. So according to what? According to the containers, we can say that the extent of trade या फिर extent of demand of Spanish olive oil was quite large, ठीक है. All right. Now, so why do you think Spanish olive oil was so famous, guys? It was famous because it supplied a better quality oil at lower prices, ठीक है. Famous okay. So supplied what? It supplied a better quality
at lower prices, है ना, कम prices में better quality provide कर सकते हैं ये, ठीक है, fine, okay. Now, olive oil is actually going to change a lot of market, guys, ठीक है. So success, अब देखो कुछ साल तक तो स्पेनिश ऑलिव ऑयल ने जो है वो पूरे मार्केट को डोमिनेट किया, ठीक है. The success of Spanish olive oil was now repeated by North African producers, ठीक है. So ये वाला जो पोर्शन है ना, ये मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज में लिखवा रही हूँ. ओके, सो स्पेनिश ऑलिव ऑयल लिख करके. सो सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले इट वाज स्पेनिश ऑलिव ऑयल, ठीक है. सो देन द मार्केट वाज कैप्चर्ड बाय हूम? It was captured by the North African producers. Okay, so now the North African producers are producing a better quality of Spanish oil, again at a cheaper rate, ठीक है. Okay, so they dominated the market throughout the 3rd and the 4th centuries. Okay guys, ये याद रखेंगे कब से कब तक? 3rd and 4th century. Okay, so पहले Spanish olive oil was dominating the market, then this domination was taken over by North Africa. They dominated the market throughout the 3rd and the 4th centuries, ठीक है. पूरे 3rd 4th centuries में उन्होंने मार्केट को जो है वो डोमिनेट किया है, ठीक है. Later on, 425, that is after 425, North African dominance was broken over by East, ठीक है. So North Africa के बाद किसने इसको ब्रेक किया? East, around when? 425, ठीक है, fine. All right. So North African dominance has been broken over by whom? By East, ठीक है. और East में कौन से एरियाज आते हैं guys? So we have Turkey, Syria, Palestine, etc. ठीक है. तो 5th and 6th centuries onwards, okay. So 5th to 6th century onwards आपको क्या देखने को मिलेगा? So 5th to 6th century onwards you will see Turkey, Syria, Palestine. They have become major producers. So Turkey, Syria, Palestine, major producers of what? Major producers of wine and olive oil. तो गाइस अब देखो यहाँ पे मार्केट जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है. कभी कोई डोमिनेट कर रहा है, फिर कभी कोई डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, फाइन. सो दिस इज व्हाट दे टॉकिंग अबाउट. ऑलराइट, ओके. सो ये मैं एक बार ना थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. देखिए हमने क्या देखा है कि बेसिक एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, सो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमने डिस्कस की, ठीक है, जिसमें आपके एग्रीकल्चर, हार्बर्स, brickyards, olive oil factories, then you have quarries, mines, etc. There were 3 products which dominated the economic market, and that was wheat, wine and olive oil, ठीक है. So what are the containers in which it was being carried? This was known as amphorae. और amphorae से हमें क्या क्या पता चलता है? It tells us about the extent of trade, fine. It tells us about the exact shape of the container. What was the liquid which was being carried? What is the raw material of which the container is made? And it also tells us where the container was being produced, okay. Main commercial product की अगर हम बात करें तो वो है हमारा olive oil, ठीक है. So this was your Spanish olive oil, which was the main commercial export and was carried in a container called Dressel 20. Why was it famous? Because it provided better quality at lower prices.
So olive oil is a main commercial export product, you can say, ठीक है. So this main commercial export product always has changing market, ठीक है. तो स्पेनिश ऑलिव ऑयल जो है वो कुछ साल तक मार्केट को डोमिनेट करता है. देन इन द थर्ड एंड द फोर्थ सेंचुरीज द मार्केट वाज देन टेकन ओवर बाय नॉर्थ अफ्रीका. देन इन द फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेंचुरीज इट वाज टेकन ओवर बाय द ईस्टर्न पार्ट, ठीक है. जिसमें टर्की, सीरिया, पैलेस्टाइन ये सब जो हैं वो आएंगे, ठीक है. तो यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा है. फाइन. So it depends on a lot of things, guys. It depends upon who's able to produce better quality at a cheaper rate, who has better trading facilities available, ठीक है. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, तो इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है. तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, हमने ऑलिव ऑयल देख लिया. अब जो हमारा मेन पोर्शन है वो कौन सा है, दैट इज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर, ठीक है. लेकिन पहले आई नीड यू टू टेक दिस डाउन. ओके, फटाफट इसको टेक डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. I hope this is done. Take this down. So I'm sure this is done. So you can take this down. Alright guys, तो ये हो गया सबका. अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर पे, ठीक है. So I don't think we'll be able to finish this today, but let's talk about agriculture and then maybe we can end the session, ठीक है. But tomorrow I think I will be able to finish up with the chapter. हाँ, yes. So we'll start with the next one, which is your nomadic empires, ठीक है. All right. Yes. So economic expansion की बात करें, so we've talked about olive oil and we've talked about wine a little bit. और अब हम आते हैं किसके ऊपर, let's talk about agriculture, ठीक है. Now there are certain areas of the empire which were known for their extreme fertility, ठीक है. जैसे कि we have Campania in Italy, okay. So अरे sorry guys, कहीं और चला गया. So which were the areas of extreme fertility? All right. And how do we know that these were areas of extreme fertility? Because we have writers like Strabo and Pliny telling us, ठीक है. So ये बहुत important है. Strabo and Pliny, ये लोग writers हैं जिन्होंने हमें बताया है कि which are the areas which have extreme fertility, ठीक है. So first of all we have Campania in Italy. This is a region. Extremely fertile, guys, ठीक है. Then we have Sicily. All right. Again, extremely fertile. Then what do we have? Then we have Fayum in Egypt. ठीक है. Again, what? Very extremely fertile. All right. Then we have Galilee by Byzantium. ठीक है. Fine. Then what do we have? So then we have Galilee by Byzantium. Then we have Gaul. ठीक है. And we also have Baetica. ठीक है. So Gaul. Sorry guys, what am I writing? ठीक है. So we also have what? We also have Baetica. So these were densely populated at the same time, extremely fertile, guys. ठीक है. Extremely fertile. बहुत fertile areas थे, you know, densely cultivated as well. Fine. तो सबसे अच्छे वाइन जो है वो कहाँ से आ रहे थे? It was coming from Campania. All right. So okay. So wine was coming from where? It was coming from Campania. ये हम याद रखेंगे, ठीक है, कि कौन सी चीज कहाँ से आ रही है. Okay. So where was wine coming from, guys?
Wine was coming from Campania. Sicily and Byzantium were producing huge quantities of wheat. ठीक है, wheat कहाँ से आ रहा है? Sicily and Campania. All right, they are producing what? They are producing huge quantities of wheat, guys. ठीक है? All right. Now, it is said that Galilee was so densely populated that every inch of the soil was cultivated. ठीक है? So, एक historian है Josephus. Fine. So, according to historian Josephus, Galilee was cultivated every inch. मतलब हर एक इंच जो है वो cultivated है. So Galilee was basically so densely populated, all right? So densely populated that it was also very densely cultivated. So much so that Josephus tells us that every inch of the soil has been cultivated. ठीक है? Fine? All right. और स्पेनिश ऑलिव ऑयल जो है वो कहां से आ रहा था? They were coming from the banks of river Guadalquivir. Okay, so Spanish olive oil, banks of, I know guys बहुत थोड़ा सा different name है, so it's difficult to learn, but please कोशिश कीजिएगा. ठीक है? Guadalquivir. ठीक है? So Guadalquivir is the is basically in southern Spain. So ये banks of river है. This is where you have the estates. You have the estates which were growing olive. Okay? Olive grow करेंगे, उससे olive oil निकालेंगे. Fine. So it is on the banks of this river Guadalquivir that you have huge estates which were basically responsible for what? Which were basically responsible for growing of, किस चीज के रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द ग्रोइंग ऑफ दीज ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ ऑलिव, जिससे कि ऑलिव ऑयल जो है वो निकलेगा. ठीक है? फाइन. तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है एग्रीकल्चर का. एक छोटा सा पार्ट और बाकी है गाइस, बट वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टाइम राइट नाउ बिकॉज यहाँ पे एक और क्लास भी है. तो मैं अभी जो सेशन है वो यहीं पे एंड कर रही हूँ. सो देखिए, इकोनॉमिक एक्सपेंशन में हमने क्या देखा है? बेसिक एक्टिविटीज देखी. ठीक है? फिर हमने स्पेनिश ऑलिव ऑयल देखा और कैसे मार्केट चेंज हुआ. फिर हमने देखा एग्रीकल्चर. ठीक है? फाइन. सो अकॉर्डिंग टू स्ट्रैबो एंड प्लिनी, दीज आर द एरियाज विद एक्सट्रीम फर्टिलिटी. So Campania, which is in Italy, then we have Sicily, Fium, which is in Egypt, then we have Galilee, Byzantium, Gaul, Baetica. ये वो जगह है which are areas of extreme fertility. Fine. Wine was coming from Campania, wheat was coming from Sicily and Campania. According to historian Josephus, Galilee was cultivated every inch. मतलब इतना डेंसली फर्टाइल था कि एक इंच जो है वो कल्टिवेटेड है. और स्पेनिश ऑलिव ऑयल जो है वो कहाँ से आ रहा है? इट इज कमिंग फ्रॉम द बैंक्स ऑफ रिवर Guadalquivir. ठीक है? where they had huge estates which were producing oil. ठीक है? Okay, let me see if we missed anything. Okay, so that's about it. So आज हमने काफी कुछ जो है वो कवर कर लिया है guys. Let us see what all have we covered. So हमने aspect शुरू किया. We have covered succession, we have covered expansion, we have covered governance, we have covered the third century crisis as well. ठीक है? फिर हमने जो जेंडर लिटरेसी और कल्चर है उस पर मैं बात कर लिया था. उसके बाद हमने इकोनॉमिक एक्सपेंशन जो है वो भी ऑलमोस्ट फिनिश ही हो चुका है, ज्यादा नहीं बचा है. 2 पैराग्राफ्स है तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. एंड विल बी फिनिशिंग विद रोमन एम्पायर, विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर. ठीक है? चलिए, सो आई हैव द टैब विथ मी. जस्ट इन केस यू हैव एनी डाउट्स यू कैन लेट मी नो गाइस. अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझे बता दीजिए. If there's anything that you have not understood, you can let me know. So, no. I don't see any chats as such right now.
चलिए, all right guys, I think I'll end the session over here. So thank you so much for joining me over here, guys. It was an absolute pleasure to have you all, and I will now see you in the next lecture. Then please take care. Thank you. Bye bye.